Okay, hello everybody. Now let's start the sums with trigonometric inverse. Using the derivatives, let's see the sum. It says, using the derivatives, prove that sine inverse x plus cos inverse x is equal to pi by 2. Now, how you can prove this? Sine inverse x plus cos inverse x is equal to pi by 2 is, let's say, fx is equal to sine inverse x plus cos inverse x. We have to prove that fx is equal to pi by 2 because we have taken sine inverse x plus cos inverse. We have to prove sine inverse x plus cos inverse x as pi by 2, and we have taken fx as sine inverse x plus cos inverse x. So this became your fx, and you have to prove that fx is equal to pi by 2. Now let's differentiate this. When we're differentiating this, we'll have d by dx fx, that is equal to d by dx sin inverse x plus cos inverse x. Okay, so how you going to differentiate? You'll differentiate this d by dx sin inverse x plus d by dx cos inverse x. Sin inverse x, you know, that is 1 upon under root 1 minus x square, and cos inverse is minus 1 upon under root 1 minus x square. ठीक है, ये माइनस रहने की वजह से दिस बिकेम माइनस बिकॉज cos इनवर्स x is minus 1 upon under root 1 minus x square. So 1 upon under root 1 minus x square minus 1 upon under root 1 minus x square, this will become 0 because this both are same. Now this is f dash x because derivatives of fx is f dash x. Now f dash x is 0 is equal to fx is a constant function. Now let fx is equal to c because fx is a constant function, so the value of x fx must be c only. So conveniently we choose x is equal to 0, right? Conveniently we'll choose x is equal to 0, and from 1 and 2 we get f0 is equal to sin inverse 0 plus cos inverse 0. So sin 0 is 0, right? Sin 0 is 0. So 0, sin inverse 0 is 0, and cos 90 is 0. So cos 90 is 0. So cos inverse 0 is 90, that is pi by 2. So this will become pi by 2. So c is pi by 2 and fx is pi by 2. Hence, if you add this with cos inverse, this became 0, cos inverse became 0, right? Cos inverse 0 becomes 0, and cos inverse, sorry, sin inverse 0 becomes 0 plus cos inverse 0 becomes pi by 2. So this became sin inverse x plus cos inverse x is equal to pi by 2. Hence this is the way we're going to prove it. याद रखना cos और sin inverse के value जो d by dx sin inverse और d by dx cos inverse के जो values है, that you have to put it up. Clear? Now we have to find the value of sin inverse x cube. So now let's take sin inverse y is equal to sin inverse x cube. Now differentiating this d by dx, right? Differentiating this d by dx is equal to d upon dx sin inverse x cube. Up sin inverse का तो you know that is 1 upon under root 1 minus x cube, sorry 1 minus x square. But over here you don't have x, you have x cube. So that will become 1 upon, this will become 1 upon under root x cube square, because sin inverse x is 1 minus under root 1 minus x square, but x के जगह पे यहाँ x cube है तो this will become x cube. And as I said, क्या अगर वो x नहीं रहेगा उसके अलावा कुछ रहेगा पावर, या if you have another term या कोई coefficient, so you have to differentiate that also. So d by dx x cube हो जाएगा. D by dx x cube is x raised to n, so that will become nx n minus 1. So this will become 3x square. Therefore this x square, x cube and square, so powers will get multiplied, so this will become x raised to 6. So d by dx is equal to 3x square under root 1 minus x square. Clear? Sorry, 1 minus x cube. Now let's move on to the next sum. Now let's see this. If you want to find the value of cot inverse 1 upon x square, so cot inverse की जगह पे will take it tan inverse, and 1 upon x square will change to x square. Now let's differentiate this. इसको differentiate करेंगे. Tan inverse x is
1 upon 1 plus x square, but अपने पास x नहीं है, अपने पास x square है, तो this became 1 plus x square and x square, sorry 1 upon x square whole bracket square and d by dx, ये अभी x नहीं था, x square रहने से इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, so that will become x square will become x raised to n, that is nx minus 1, so this will become 2x और ये हो जाएगा अपना 1 plus x raised to 4, so that's the answer. Now let's see how we're going to find the value of cos inverse bracket में under root 1 plus x upon 2. So let's differentiate this. Cos inverse का क्या है? 1 upon under root 1 minus x square. तो यहाँ पे आपका x के जगह पे you have 1 plus x upon 2 under root पूरा. So this will become 1. Cos inverse is 1 upon under root 1 minus x square. So x के जगह पे we'll put whole this term under root 1 plus x upon 2. So this became minus 1 upon under root 1 minus bracket में under root 1 plus x whole bracket square. But this is not x. So what you want to do is इसको भी differentiate करेंगे. So this will become excuse me. इसको भी differentiate करेंगे. That means d by dx under root x. So that will be under root x is 1 upon 2 root x. So this will change to ये तो आपका ऐसे ही आ गया, राइट, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो यू विल हैव 1 माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इंटू इसका इज स्क्वायर रूट का आपका स्क्वायर रूट जो है स्क्वायर रूट का आपका आता है 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो एक्स के जगह पे दैट इज 1 प्लस एक्स अपॉन 2, बट अभी ये एक्स नहीं है, 1 प्लस एक्स अपॉन 2 है, तो उसको भी डिफरेंशिएट यू हैव टू डू इट. तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे, क्लियर, तो दिस विल बिकम, इसको आप सॉल्व करेंगे, राइट, तो यू विल टेक दिस थिंग, तो ये आपका हो जाएगा टेकिंग दिस पार्ट, हाँ, दिस विल बिकम अंडर रूट 2 और ये ऊपर जाके दैट विल बिकम डिनोमिनेटर में, अगर आपके पास डिनोमिनेटर रहेगा तो दैट गोज अप, राइट, तो ये स्क्वायर रूट 2 ऐसे चले गया, इसका यू विल फाइंड द एलसीएम, एलसीएम आपका 2 आएगा, तो 2 माइनस 1 दैट इज 1, ठीक है, प्लस x बराबर, इसका जब आप ये करोगे एलसीएम लेंगे, सो दैट विल बिकम 2, राइट, माइनस 1 प्लस x प्लस 1 माइनस x, सॉरी, बिकॉज ये माइनस इज फॉर बोथ द साइड, और ये डिनोमिनेटर का 2 ऊपर जाके रूट 2 हो गया, एंड दिस बिकेम अंडर रूट 1 माइनस x हियर इनटू दिस विल बिकम 1 अपॉन ये रूट 2 और ये 2 डिवाइड करोगे, तो 2 इज रूट 2 इंटू रूट 2, तो ये रूट 2 जो ये वाला है बाहर आके रूट 2 हो जाएगा, व्हेन यू डिवाइड विद दिस 2 दैट विल बिकम रूट 2 एंड यू विल हैव 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x, एंड यहाँ पे दिस 2 विल कम इन फ्रंट, राइट, ये तो आपका 0 हो जाएगा, बराबर, ये दिस इज 0 एंड x अपॉन 2 जो है उसका 2 बाहर आ जाएगा एंड x का विल बिकम 1, क्लियर, बिकॉज इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे दिस विल बी 1 अपॉन 2 प्लस x अपॉन 2, राइट, इसको सेपरेट कर देंगे तो 1 अपॉन 2 कॉमन डिनोमिनेटर नहीं लेते, 1 अपॉन 2 प्लस x अपॉन 2, 1 अपॉन 2 आपका 0 हो गया, प्लस d by dx x अपॉन 2, तो 2 आपका आगे आ जाएगा एंड x का इट बिकम्स 1, so that will become half, clear. Now ये मल्टीप्लिकेशन है, तो दिस रूट 2 एंड दिस रूट 2 will get cancelled, बराबर, and this will become square root of a minus b and a plus b, clear, a minus b and a plus will be under root है दोनों, तो this will be 1 square minus x square, right, a minus b a plus b का आइडेंटिटी यूज करेंगे, that is a square minus b square, तो अंडर रूट में, तो this will be under root 1 square minus x square, so that's the final answer. Okay, now let's look at this sum. We have to find the value of cos inverse ब्रैकेट में 4x 4 cos cube x minus 3 cos x. अब ये एक आइडेंटिटी है, cos 3x की आइडेंटिटी is 4 cos cube x minus 3 cos x. तो ये आइडेंटिटी you have to remember. ये आइडेंटिटी आपको याद नहीं होगा, cos 3x is equal to 4 cos cube x minus 3 cos x. So this will become cos 3x and cos inverse multiplied by cos
x will become only x. तो ऐसा cos inverse cos 3x will become only 3x. So now differentiating y is equal to 3x, d by dx, 3x is 3, आगे आ जाएगा x का it's 1, so d by dx is only 3. अब इसमें क्या हो रहा है ना, यू हैव ट्रिग्नोमेट्री के काफी सारे फॉर्मूलेस इसमें आएंगे, तो यू हैव टू रिमेंबर दोस फॉर्मूला. अगर आपको एक्सक्यूज मी, अगर इफ यू डोंट नो दोस फॉर्मूला तो यू वोंट बी एबल टू सॉल्व दिस सम. सो यू नीड टू नो ऑल द फॉर्मूलास, क्योंकि आगे भी वी विल बी सॉल्विंग द सम्स जिसमें यू गोना यूज द फॉर्मूलास. Okay, now let's see. You have to find the value of sine inverse bracket में under root 1 minus cos x upon 2. अब 1 minus cos x क्या होता है? ये वापस एक आइडेंटिटी है. 1 minus cos x होता है 2 sin square x upon 2. क्लियर? तो ये आइडेंटिटी आपको यूज करना है. ये आइडेंटिटी यूज करेंगे तो इसमें this 2 and this 2 will get cancel. Square and square root cancel हो जाएगा, तो you will have sin inverse sin x upon 2. तो sin inverse sin क्या हो जाएगा, दोनों साइन कैंसिल हो जाएंगे एंड यू विल हैव ओनली x upon 2. सो y is equal to x upon 2. लेट्स डिफरेंशिएट दिस. जब तुम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो दैट विल बिकम dy by dx and d by dx x upon 2. तो ये 2 आपका आगे आ जाएगा एंड x is 1, so this will become dy by dx half. Clear? Okay, now let's look at this sum. You got cot inverse ब्रैकेट में cos x upon 1 plus sin x. अब first thing is you have to differentiate this with respect to x, right? Cot को always what we do is tan. जब ये tan हो जाएगा तो this will become reciprocal. So this will be tan inverse 1 plus sin x upon cos x. अब जब भी आपके पास 1 plus sin x और cos x आता है तो you gonna use the identity 1 plus sin x is equal to whole bracket cos x by 2 plus sin x by 2 whole bracket square, right? ये याद करना है. and cos x is cos square x upon 2 minus sin square x upon 2. clear? ये आइडेंटिटी है. 1 plus sin x की आइडेंटिटी याद रखो, cos x की आइडेंटिटी याद रखो. this is a square minus b square, so that will become a plus b and a minus b. तो जब ये a plus b and a minus b होगा तो this will be in this form, right? अब this and this are same, right? But this is square, तो ये एक और ये स्क्वायर कट हो जाएगा. You will only left with cos x upon 2 plus sin x upon 2 and cos x upon 2 minus sin x upon 2. क्योंकि ये दोनों सेम नंबर है, देखो ये and this one, so that will get cancelled. But this is the power of 2, तो ये एक कट होगा, ये पूरा कट हो जाएगा. Now you have this in this form, right? अब divide this whole by cos x by 2. तो cos x by 2 को ये करेंगे तो ये कैंसिल होके 1 होगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 1 होगा. यहाँ sin x by 2 और cos x by 2 आ जाएगा, तो that will become tan x by 2 and similar this will become tan x by 2. तो अगर तुम ये देखते हैं 1 plus tan x by 2 and 1 minus tan x by 2, तो this is tan ये tan pi by 4 plus x by 2. ठीक है, ये याद रखना. tan 45 plus x by 2 हो जाता है आपका. क्लियर? अब नाउ यू गॉट tan इनवर्स tan तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे. यू विल हैव pi by 4 plus x by 2. अब y is equal to this. If you differentiate this, so pi by 2 is a number, so that will become 0 and x by 2, ठीक है, x by 2 का 2 आगे आ जाएगा and x का 1 हो जाएगा, तो this will become half. So dy by dx will be half. Clear?